Hello students, let's do some concepts on trigonometry. First is we write sin A. Sin A. It is not the product of sin and A. It is not the product of sin and A. It is an abbreviation. What is sin A means? It means sine of angle A. Clear? It is not sine into A. Sine itself is nothing. Similarly, cos A means cosine of angle A. Clear? Next, cos square A or sin square A. What is cos square A or sin square A? Cos square A is cos A का whole square या sin square A is sin A का whole square. Cos square A और cos A का whole square both are the same thing. Sin square A is sin A का whole square means sin A into sin A. जैसे आप लिखते हो x square equals to x into x. Similarly, sin A का whole square means sin A into sin A. Clear? Third, we write cosec A as 1 upon sin A. Clear? Cosec A is reciprocal of sin A. It can also be written as sin A की पावर minus 1. जैसे हम लिखते हैं 1/2. It can be written as 2 की पावर minus 1. Similarly, 1 upon sin A can be written as sin A की पावर minus 1. But it is not equals to sin inverse A. This term is called sin inverse A. ये आप हायर क्लास में 12th क्लास में स्टडी करोगे, अदरवाइज फिलहाल आपको नहीं है. क्लियर है? सिमिलरली sec A is 1 upon cos A means cos A की पावर माइनस का 1. क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट है बच्चे, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे? सपोज मेरे पास एक एंगल ए है, ट्राइंगल है, एंगल ए, राइट एंगल एट बी. साइन ए इज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस. और आप सब लोगों को अभी तक पता होगा कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द longest side. In any right angle triangle, hypotenuse is always the longest side. तो ये दोनों sides जो होंगी BC और AB both will be lesser than hypotenuse. तो हमारे पास हमेशा क्या होगा बच्चे? जो न्यूमरेटर होगा वो लेस होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा. Let this is 3 and this is 4. How will we get AC? AC का whole square equals to AB का whole square plus BC का whole square. That is 4 square plus 3 square, 25, and AC will be 225. That is 5. What will be the value of AC? 5. Clear? Then what will be the value of sin A? 3/5, and it is less than 1. Therefore, the value of sin theta, theta is any angle, and cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Value of sin theta and cos theta is always less than or equal to 1. Clear? It is -1 to 1 होती है, पर यह बड़ी क्लासेस में करोगे. अभी तक आपके लिए इतना है कि sin theta and cos theta is always equals to less than or equals to 1. क्लियर है बच्चे? चलो एक एग्जाम्पल करते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये. tan theta is given 4/3. Find the other trigonometric ratios. क्लियर है? सपोज एक ट्राइंगल है, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. BAC. ABC is a right angle triangle at B. Let angle BAC is angle theta.
Okay. Which is the opposite side to theta? Opposite side to theta. This is adjacent side of theta and it is hypotenuse. Clear? What is the formula for tan theta? Tan theta equals to होता है बच्चे opposite side upon adjacent side. Clear? Now, which is opposite side? It is given equals to 4 by 3. मुझे given है, तो हम opposite side को लिख लेंगे बच्चे 4k और इसको लिखेंगे 3k. What is k? तो लिखेंगे 4k और 3k. Where k is any positive number. k कुछ भी positive number हो सकता है. Clear? अब हमें hypotenuse चाहिए बाकी trigonometric ratios के लिए. In triangle ABC. Which is hypotenuse? AC. और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. क्लियर? AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर. क्लियर? AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3k square 9k square plus 4k square 16k square sorry, and AC का square equals to 25k square. What will be the value of AC? Under root of this 5k. Clear? It is 5k. We have got hypotenuse. Then now we will find values of other trigonometric ratios. What will be the value of sin theta? What is sin theta? Opposite side upon hypotenuse. Which is opposite side? BC upon AC. That is 4k upon 5k. K and k gets cancelled. 4 by 5. Clear? Now cos theta. What is cos theta? AB upon AC. Adjacent side upon opposite side. It is 3k by 5k. That is 3 by 5. Look, both sin theta and cos theta, value of sin theta and cos theta is less than 1. Now tan theta is given. Next we will find cosec theta. And we know what is cosec theta? Reciprocal of sin theta. 1 by sin theta. Or hypotenuse upon opposite side. 1 by sin theta, 1 upon 4 by 5. A fraction in denominator will get reciprocal. That is 5 by 4. What is sec theta? 1 by cos theta. 1 upon, what is the value of cos theta? 3 by 5. That is 1 into 5 by 3. Sec theta is 5 by 3. Now we have to find cot theta. What is cot theta? Cot theta is cos theta by sin theta, or we can write it as 1 upon tan theta. आपको दोनों के दोनों फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए. ठीक है? 1 by tan theta means 1 by 4 upon 3. That is 1 into 3 by 4 equals to 3 by. Clear? बिल्कुल clear है. Students, we will do next examples in the next class.